So if you see the questions, all the questions are exactly same here, right? We just have to apply the definitions and step by step we have to obtain the results. So if you see very first example says f, right? Here f is a vector, right? And r is a vector, right? R is a standard vector, r is a position vector. So we know r is nothing but xi cap plus yj cap plus zk cap. Right, so we have to show that del dot f cross r is 0, and what is given to me is del cross f is 0, curl of f is 0, right? So proof wise, so f is this f1. So what we have to find, we have to find first f cross r. So f cross r is I j k, f1 f2 f3 x y z. तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूं, so I cap into f2z minus f3y minus j cap into f1z minus f3x and k cap into f1y minus f2x. तो this we know how to calculate. अब मुझे क्या चाहिए, इसका del dot चाहिए. So अगर आपको results directly याद नहीं है तो सिर्फ इसको याद रखो, del को याद रखो. Del is what? I into del by del x plus j into del by del y plus k into del by del z. बस. So rest all we know. So this is del dot f cross r हमने ऊपर निकाल लिए. तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, आई और आई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, देन डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, डेल बाय डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन. अब प्लीज ध्यान से करना है. अब देखो डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ऑब्वियसली जेड एंड वाई विल बी कांस्टेंट्स, बट f2 f3 आर द, दे कैन बी फंक्शंस ऑफ x. सो इफ यू सी z बाहर आ गया, so z is constant, so del f2 by del x minus y बाहर आ गया del f3 by del x. Similarly बाकी सब जगह हो गया. So now अब देखो हमें what is given to me that del cross f is 0. So now कहीं ना कहीं मुझे ये पिक्चर में लेके आना है del cross f, right? So if you see, so now I know, so this is the term from where I am getting x, this is the term from where I am getting x. So x is common, this is the term, then y is common, this is the term, and z is common, this is the term, right? Further this can be written as what, this is nothing but x into I cap, right? Obviously जब एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे then you will understand the strategy, because basically मुझे I have to go to the cross product, right? So if you see, this is x into I cap plus y into j cap plus z into k cap dot of this. Now, if you see, what is this vector? What is this vector? If you see, if you remember, what is this vector? इसको evaluate कर लो, left hand side को evaluate कर लो जो आपको given है, del cross f. So if you remember, what is del cross f? I j k, right? What is this one? This one is del by del x, del by del y, del by del z. And this is nothing but f is nothing but f1 f2 f3. So अगर आप इसको ओपन करोगे तो I cap के साथ आ जाएगा del f3y minus del f2z. So you see, then j के साथ ओपन करोगे तो del f3x minus del f1z with minus sign. तो अगर मैं minus sign अंदर ले जाऊं तो ये बन गया. And ऐसे ही k के साथ ओपन करोगे तो del f2x minus del f1y. So you see, this is nothing but del cross f. This is given to me as 0, and we know अगर एक वेक्टर 0 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है. So finally we get answer as 0. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So once you are stuck, so suppose आपको ये चीज नहीं दिख रही है, so you stop here and जो आपको given है उसको evaluate कर लो, right? Then the things will be much more clear, right? Now next, if you see is, if f1 and f2 are two vectors joining the points this and this to the Ma'am, आपकी origin. voice clear. So if I go to next question, so example number 2 says if f1 and f2 are vectors joining the points. So f1 join this vector with the origin. So obviously f1 vector क्या हो जाएगा, x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and f2 vector ये हो जाएगा. So what you have to prove? You have to prove that the divergence of f1 cross f2 is 0. So you see, divergence is nothing but what? Divergence is nothing but del dot f1 cross f2. तो हो जाएगा क्वेश्चन, पहले f1 क्रॉस f2 निकाल लेंगे. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर फर्स्ट वी विल कैलकुलेट. इज इट फाइन बच्चे? Yes, ma'am. So moment you will calculate the cross product, so you see
दिस इज I J K x1 y1 z1 x2 y2 z2. तो जब इसको ओपन करोगे y1 z2 minus z1 y2 ये I cap हो गया, ऐसी j cap k cap. So now divergence is del dot. So this is my del dot this vector. जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ गया del by del x of this, del by del y of this, del by del z of this. अब you see इसमें कोई x की टर्म नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0 बिकॉज़ इसमें y की टर्म नहीं है, इसमें z की टर्म नहीं है, so whole of the things becomes 0. Right? Now next is evaluate curl of r sin r. Right? Where r and r vector, so they have their usual meaning. So here r vector is nothing but xi cap, yj cap, zk cap, and r is nothing but the magnitude. So r is nothing but under root of x square plus y square plus z square. Is it fine? Yes, ma'am. तो हमें r sin r का कर्ल निकालना है, तो पहले हम r sin r की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका हम डेल क्रॉस कर लेंगे. So you see he is just naming this vector as f, so फिर हम डेल क्रॉस f कर देंगे. So let us first try to find the value of f. So f is what? R, so this is r into sin r. So you see r is a scalar quantity, r is a magnitude, so this whole term can be multiplied inside. So x sin r, y sin r, z sin r. अब मुझे इसका कर्ल निकालना है, सो कर्ल क्या हो जाएगा? I del by del x j k del by del by del by del z. नीचे क्या आ गया? x sin r, y sin r, z sin r. बस मेरे आपने डेरिवेटिव्स देते हैं, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ओपन करोगे तो I वाली टर्म क्या आ जाएगी? del z sin r minus del by del z by sin r. So you see all these, this determinant. यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? Before I tell you how to take the derivatives. Is it fine, बच्चे? यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. So let us take the first term. Let us take the first term. So first term is, let me show one of the derivatives separately. So first term is derivative z sin r. So if you see z is independent here, तो z तो आ जाएगा बाहर. So del by del y of sin r. So now this will be chain rule. So z, now derivative of sin r. What is derivative of sin r? So इसको basically हम क्या लिख सकते हैं? Actually this is nothing but del by del r sin r. ये chain rule हो जाता है, del r by del y. So if you see now, what is derivative of sin r? What is derivative of cos? Sin? Yes, sin derivative is cos. So this is cos r. Further, if you remember, what was r? R in terms of x, y, z was nothing but x square plus y square plus z square to the power 1 by 2. So अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, तो ये कितना बन जाएगा? z cos r, right? So this will be 1 by 2 नीचे आ जाएगा, right? x square plus y square plus z square n minus 1. So 1 by 2 minus 1 हो जाएगा minus 1 by 2. Further chain rule से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y के साथ 2y. So now 2 will cancel. So this is z cos r y upon, if you see ये under root of x square plus y square plus z square बन जाएगा, under root of x square plus y square plus z square. और इसको मैं दोबारा क्या लिख सकती हूँ? I can write this as r. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. तो ये क्या बन गया? zy by r into cos r. zy by r, so you see zy by r into cos r. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो थोड़ा सा ना यहाँ हमें इंटेलिजेंटली एक्ट करना होता है, बाकी सब चीजें सिमेट्रिकल हो जाती हैं. ये देखो जब हमने एक डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट टर्म का, तो ये जो नंबर बाहर था ये आ गया, जिसके साथ नीचे डेरिवेटिव हो रहा था, y के साथ डेरिवेटिव हो रहा था, वो साथ में आ गया और साथ में r आ गया नीचे. अब इधर क्या हो जाएगा? y बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव z के साथ हो रहा है तो yz ओवर r. तो हर डेरिवेटिव आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से देखो. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये z, नीचे x है तो zx ओवर r, यहाँ xz ओवर r, राइट? और इधर लास्ट में क्या आ जाएगा? xy ओवर r, और इधर भी क्या आ जाएगा? xy ओवर r. बेटा इज इट फाइन? सो इफ यू सी ऑल द टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड, सो आंसर इज 0. बेटा इज इट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am.
right? तो थोड़ा सा हमें intelligently with the help of symmetry we have to decide. Now next question is prove that divergence of vector r is equal to 2 by r. So you see we know divergence is nothing but what? Del dot my vector, del dot r. अब यहाँ पे r vector नहीं है, this is r cap. So r cap को हम क्या लिख सकते हैं? R vector over r. But is it fine? Yes, ma'am. Right? And we know divergence. So you see, this is nothing but what? अगर मैं vector notation में लिखूं, so del क्या होता है? Del is nothing but del by del x I cap plus del by j cap plus del by del z k cap dot. R vector क्या हो जाएगा? X I cap, y j cap, z k cap over R है, तो हर टर्म में R डिवाइड हो जाएगा. अब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, बेटा am I audible? Yes, ma'am. Okay. So is the screen visible? Yes, ma'am. So if you see, if I take the dot product now, तो ये क्या बन जाएगा? Del by del x of x by r plus del by del y of y by r plus del by del z of z by r. तो बेटा आप देखो, अब किसी एक को इवैल्यूएट करेंगे, we will evaluate only one of them, बाकी सिमेट्री से आ जाएगा. So let me evaluate this one. So del by del x, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x into r inverse. अब देखो x भी फंक्शन ऑफ x है एंड r इफ यू रिमेंबर r इज व्हाट? r इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2. तो बेटा दोनों ही फंक्शंस ऑफ x हैं, तो यहाँ पे uv प्रोडक्ट रूल लगेगा. इज इट क्लियर बच्चे? बिकॉज दोनों में ही x आता है. अगर एक कांस्टेंट होता तो वो बाहर आ जाता डेरिवेटिव से. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Now let us do this. So first function, derivative of second plus second function, derivative of first, and derivative of x with respect to x is how much? 1. But is it fine? Yes, ma'am. Now this will be what? So x. So I think this I will do here only. So derivative of r inverse कितना हो जाएगा? So ये हो जाएगा -1, नीचे ये आ गया -1. पहले चेन रूल लगेगा. So -1 r पावर -2 n -1 हो, -2 हो गया. और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? सो डेरिवेटिव ऑफ, अब ये थोड़ा सा ना अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x जनरली कितना होता है? ये होता है x विद x r. समझ में आया ये कैसे होगा? डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, x बाय r कैसे होगा? Yes, ma'am. बेटा क्लियर है ना सबको? ऑलरेडी हमने ऊपर सॉल्व किया था अभी. Yes, ma'am.
तो ये कितना हो गया? This is nothing but how much? So x by r plus r inverse, right? So this we can solve now. So this is nothing but x square, or this is r cube plus 1 by r. तो अगर आप LCM ले लो, so this is yes, यहाँ पे minus sign आ जाएगा. So this we can simplify now. So this we can simplify now. So you see, तो अगर मैं उल्टा लिखूं तो ये देखो, ये आ गया 1 by r माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्यूब. अब बाय सिमेट्री, सो बाकी डेरिवेटिव मुझे निकालने की जरूरत नहीं है. सो 1 बाय r माइनस x की जगह y स्क्वायर आ जाएगा और z फिर z आ जाएगा. So if you see, this is 3 by r minus 1 by r cube x square plus y square plus z square, and ये nothing, this is nothing but r square. So 1 r will cancel. So 3 by r minus 1 by r. So this is 2 by r. Is it fine? यही proof करना था. Is it fine? Yes, ma'am. Now if you see example number 5, so almost all the questions are same. Functions change होंगे sir. Obviously you see, this is u is a scalar now. So u is not a vector. V is a vector. So we have to show divergence of u into v. तो सबसे पहले हम u into v निकालेंगे. So this is u, this is v, right? So we have to show that the divergence of u into v is nothing but 5u. So u into v, I don't know, ये अपने मेथड से कर रहा है. So there are lot many methods. ये वो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लगा देगा खोलने वाला, right? Otherwise आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. So u into v कितना हो जाएगा? So you see, स्केलर हर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x square plus y square plus z square into x I cap plus x square plus y square plus z square into y j cap plus x square plus y square plus z square into z k cap. अब मुझे क्या चाहिए? डाइवर्जेंस ऑफ यूवी. सो डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट यूवी. तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. अब आपको पता है डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस डेल क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप. सो नाउ इफ यू जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ आई वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो डेल बाय डेल एक्स. सो ये कितना बन जाएगा? एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर वाई, एंड लास्ट में आ जाएगा डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब. दैट्स इट. सो वी जस्ट टेक द डेरिवेटिव नाउ. सो डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव? बताओ फटाफट. 3x square 3x square z square. plus z square. Is it fine? Yes, ma'am. फिर आ जाएगा x square 3y square plus z square. फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो x square plus y square plus 3z square. Is it fine? Yes, So ma'am. 4, so 3x square plus x square is 4x square. 3z square plus 3y square plus y square is 4y square. So 4x square y square is common. X square y square z square. So that is nothing but u. So answer will be 4u. 4u, 5u. Why 5u? Oh, 2 है. I'm sorry. 3x square. This is 3. This is 3x square. This is 1 more x square. This is 1 more x square. Is it fine? The total 5 हो गए. बेटा clear है? Yes, ma'am. तो 5x square हो गए, 5y square हो गए, 5z square हो गए. So 5 is common. So x square, y square, z square is nothing but your u, right? So this way. Show that del square. So let us do example number 6. So I think example number 7 and 8, 9. So almost, if you see in all the examples, if you see this example, so we'll do one more day. We'll do one more day, right? Tomorrow also we'll do these examples only. So let me just take this one. Example 7 you will do yourself and ask your doubt tomorrow. Let me take example number 6. So you see, this is del square. This is del square of
r to the power n. So you have to show that del square of r to the power n is this number. See, जब भी del का square आए, so this is Laplacian, and you just have to remember del square is nothing but del dot del, right? So you see del dot del of Rn, right? So हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए del dot del of Rn. So obviously we'll solve one by one. So this is del dot del of Rn. Is it fine? Is it fine? याद है हमने निकाला था ये, हमने जब ये डाइवर्जेंस वाला क्वेश्चन किया तो हमने del of Rn निकाला था. Remember? R to the power n. Yes, ma'am. क्या आंसर आया था इसका? n. R to the power n minus 2. मान भी आता into vector r. So we can use the result directly here. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? So let me do here only. So m into r to the power m minus 2 into r vector. Is it fine? Now m is constant. So m तो बाहर आ गया. So you see this is del dot r to the power m minus 2 and r vector. Is it fine? Yes, ma'am. अब ये देखो, अब now this is divergence of two vectors, right? Divergence of two numbers, जो कि दोनों, इसमें भी x वाली टर्म आती है, इसमें भी x वाली टर्म आती है, इसमें भी x वाली टर्म आती है. बेटा देखो, चॉइस आपकी है, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो. आप डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, या फिर आप इस स्टेप के बाद ऐसे भी कर सकते थे. सो दिस इज m. सो डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट किसका? r to the power m minus 2 into vector r. तो आप ये भी कर सकते थे कि डेल की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेल बाय डेल x i कैप प्लस डेल बाय डेल y j कैप प्लस डेल बाय डेल z k कैप डॉट, ये क्या बन गया? r to the power m minus 2. So this is scalar. r vector हमें पता है क्या होता है? x. So you see this is x i कैप plus r to the power m minus 2 y j कैप plus r to the power m minus 2 z k cap. Girls, clear? Yes, ma'am. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? m तो बाहर हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेल बाय डेल x of r to the power m minus 2 into x plus डेल बाय डेल y r to the power m minus 2 into y plus डेल बाय डेल z r to the power m minus 2 into z. So now you just have to evaluate one of the derivatives. So let us evaluate this derivative. So del by del x of r to the power m minus 2 x. So you see ये derivative क्या बन जाएगा? So first function as such. So r to the power m minus 2. So derivative of x will be 1, right? Plus x. अब जब derivative of r लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? m minus 2 नीचे आ जाएगा. r की पावर कितनी बन जाएगी अब? m minus 3. m minus 3 और साथ में क्या आ जाएगा? फिर क्या? by curl x. del r by del x. और del r by del x की वैल्यू कितनी होती है? X by r. By r. So you see this is x by r, right? So you see how much this will be now. So this will be x square, right? So this is r to the power m minus 2. So if you want m minus 3 you can take common. Or we can write this way only, r to the power m minus 2 plus x square. और ये नीचे if you see this is r m minus 2 को अगर मैं नीचे ले आऊंगी, राइट, या ऊपर ही ले जाते हैं, बाद में देखते हैं इसको एडजस्ट करके. तो अगर r की एक पावर ऊपर और ले जाओगे तो वो कितनी हो जाएगी? m minus 4. Is it fine? Yes, ma'am. All of you? Yes. Yes. So now, so you see पहली टर्म से ये आ गया. Obviously दूसरी टर्म से क्या आ जाएगा? दूसरी टर्म से आ जाएगा r to the power m minus 2 plus y square into r to the power m minus 4. फिर r to the power m minus 2 plus z square into r to the power m minus 4. Is it fine? Yes, ma'am. तो ये कितना बन जाएगा? What will be the final term? What will be the final term? Let us see what we have to prove. We have to prove this is equal to m into m plus 1 into r to the power m minus 2, right? So you see how much this will become. So जब इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 times r to the power m minus 2 plus x square plus y square plus z square, फिर से r square बन जाएगा
into r to the power m minus 4. Is it fine? और बाहर साथ में क्या था, एक m था. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये तो बन गया r to the Excuse power me, m ma'am. minus. हाँ जी. मैम ये लास्ट सेकंड स्टेप दोबारा बताना. कौन सा वाला बेटा? लास्ट सेकंड. ये वाला. यस मैम. ये देखो, ये तो ये पूरी टर्म ये तो एज सच ही है, r to the power m minus 2. ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन गया. ये जब r को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये r to the power -1 बन जाएगा. तो m r की पावर ऊपर m minus 3 है तो -1 हो जाएगा, तो m minus 4 हो गई r की पावर. इज इट फाइन? और साथ में प्लीज ये m minus साथ में m यस minus मैम. 2. ये यस मैम यही था. ठीक है, तो जब आप इनको सबको ऐड करोगे तो साथ में इधर साथ में एक आपका m minus 2 भी आ जाएगा. Is it fine? यस मैम. So you see this is m. So if you see this is 3r m minus 2, right? And if you see this is m minus 2 और साथ में क्या है r की टोटल पावर कितनी हो गई m minus 2. So then finally r to the power m minus 2 is common. So m r to the power m minus 2 is common. तो अंदर क्या बन गया 3 plus m minus 2. So ये कितना बन गया m plus 1 r to the power m minus 2. Beta, is it fine? Girls, clear है? यस मैम. So there are lot many ways. One way your book is doing, one way I have shown, right? So example 7th you will do yourself. Example 8th and example 9th. ये तीन examples कल खुद से करोगे. कोई doubt होगा मेरे से पूछोगे. I'll start with example 10 tomorrow. Is it fine?